Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 17th and 18th of November. In this video we will be talking about PM Modi's visit to Bihar. Then we will be talking about Purv Prahar exercise that has been launched by our India, which is a tri-service exercise. Then Gujarat, it became India's first state to implement a dedicated semiconductor policy. Right, important. We will be discussing this in details. Then we will be talking about CO2 emissions report. Then we will be talking about Austrahind exercise. All these things will be discussed in detail. So stay tuned with us till the end. In this video, a total of 18 important current affairs will be discussed of utmost importance. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch and it is very important for your learning. Also students, at 5 am in the morning, we make sure to upload the daily current affairs file. Then we also make sure to upload the weekly, monthly current affairs as well as the topic wise are uploaded on time so that it becomes easy for you to grasp all the important concepts. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then let's next move to the national affairs. PM Modi visited to Bihar on 13th of November and laid the foundation stone of various projects for the development in the region. First, one such project, an important one, is the dedicated to the nation is multiple development projects worth around 12,100 crore rupees in Bihar. No, the important one here that we are talking about is he laid the foundation stone for AIMS Darbhanga at a cost of 1,264 crore rupees. Take a note of this. AIMS will be developed in Bihar, but in Bihar too, where it will be at Darbhanga. Next is PM Modi inaugurated multiple initiatives in the petroleum and natural gas sector worth 4,020 crore rupees. So do remember them, both are equally important, but the most important part is about AIMS Darbhanga in Bihar. Apart from this, PM Modi also launched multiple national highway projects worth around 5,070 crore rupees in Bihar and railway projects worth 1,520 crore rupees in Bihar. Who is the Chief Minister of Bihar? Nitish Kumar. What is the capital of Bihar? Patna. Next, India has launched a tri-service military exercise, Purv Prahar, in eastern sector. So, Purv Prahar, right? It is a tri-service exercise, correct? That means tri-service means Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force. All three of them will take part in this exercise. And here, this Purv Prahar will be from 10th to 18th of November. Correct? What is the location where this exercise will be conducted? It will be in Arunachal Pradesh. Correct? Then in this Purvi Lahar exercise, you will be seeing Rudra. Then M777 helicopters, artillery systems taking part in this exercise. Correct? Then multiple drones will be used here. Correct? First person view drones will be used here. Swarm drones will be used here for this exercise. Correct? And it is Indian Army that is conducting this high intensity tri-service exercise, Purvi Lahar. Next is Gujarat became the first Indian state to implement a dedicated semiconductor policy. See, we know that Gujarat is the semiconductor hub, or it is considered as the semiconductor hub of India. Right? You are seeing that it is also the manufacturing hub of India. Multiple
manufacturing of the semiconductors are coming up, and we know these semiconductor chips will be game changer in the coming ahead, right? Why? Because they will be very important for electronic devices, your mobile phones, your earphones, or your laptops, tablets, TVs, even in the car, in the dashboard, in the electronic system, you see these chips, right? So these semiconductor chips are very important, right? And their manufacturing is also equally important, and Gujarat has become the semiconductor hub for manufacturing of these semiconductors. So recently, if you can see here, Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat, has launched Gujarat Semiconductor Policy from 2022 to 2027 and became the first Indian state to implement the dedicated semiconductor policy. Also, Gujarat has established the Gujarat State Electronics Mission to ensure the effective implementation of this policy. Also, the initiative complements the central government's India Semiconductor Mission launched in 2021 with a budget of 76,000 crore rupees to boost the domestic semiconductor production. Next is CEEW report, right? This is about India's climate report that stated that the Indian policies are expected to reduce CO2 emissions by around 4 billion tons by 2030. In that, the energy related projects that are coming in today's world, they are mostly focusing on the green energy, right? Such as your green hydrogen, your methanol, solar energy, correct? So these are the green sources of energy, and these will in turn reduce the pollution in the atmosphere, that is your carbon dioxide, carbon monoxide. They will be reduced as they won't create any carbon related byproduct when they are burned, right? So this report stated that India's climate policy, they are working on this track, and it is expected that they will reduce the carbon dioxide emissions by around 4 billion tons by the year 2030. This report released by CEEW, that is your Council on Energy, Environment and Water's latest report. Correct. Apart from this, remember here that the key findings stated that India, the fast developing South Asian country, is now the fifth largest economy and has pledged to reduce emissions by 1 billion tons by 2030 at the 26th COP or at the UNFCCC that was held in Glasgow, Scotland in 2021. Apart from this, the report also showed that the policies designed for the India's power, residential and transport sector have already saved 440 million tons of carbon dioxide between 2015 to 2020. Next is Austrahind exercise. This is, as the name suggests, Austra, that is Australia, and Hind means our Hindustan, that is India. So this Austrahind, this is the third edition of this exercise held between India and Australia, right? And what is the location where this exercise was held? It was held in Pune, Maharashtra, and it is a joint military exercise between these two nations. Apart from this, from Indian side here, remember Indian contingent included 140 personals, mainly from the Dogra regiment, right? Take a note of this. If we talk about Australia, who is the Prime Minister? Anthony Albanese. What is the capital here? Canberra. Next is Jitendra Singh has inaugurated India's first Biomanufacturing Institute, that is BRIC, National Agri-Food Biomanufacturing Institute at Mohali. So I repeat, Jitendra Singh, our Union Minister of Science and Technology, inaugurated a new complex of India's first Biomanufacturing Institute, that is BRIC NABI, that is BRIC, National Agri-Food Biomanufacturing Institute, the aim of which is basically to enhance the India's agri-food sector through advanced biotechnology at Mohali, Punjab. Location is important of this, so take a note of this. Next is India's first writer village, and we have discussed this also multiple times, students, which is the India's first writers village, right? And where it has been inaugurated? It has been inaugurated in Dehradun, right? Take a note of this. So India's first writers village was inaugurated by former President Ramnath Kovind in Uttarakhand, and Uttarakhand's Government Lieutenant General, right, Gurmeet Singh, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami in Dehradun, Uttarakhand. Correct? Take a note of this. So Dehradun is the India's first writer village, and Dehradun is where? Dehradun is in Uttarakhand. Next
Next is international affairs. We are talking about climate change, and here a report was released by United Nations Environment Program that stated that the international public adaptation finance flows to the developing countries has increased, that the developing countries, they are putting more money towards our climate finance goals. So this amount of money has increased by almost 32% from 22 billion dollar in 2021, and it has increased to significantly 28 billion dollar in 2022. That is an increase of 32%. And here this progress report was released during the COP26 event held in Glasgow, Scotland. Or sorry, this was adapted towards working on the environment during the COP26 held in Glasgow, Scotland in 2021. Also, the aim here was basically to at least double their collective efforts in adopting the sustainable development goals and also increase the funding towards the environment. Apart from this, next, one more thing. If we talk about UNEP, who is the executive director here? Inga Anderson. Headquarter is in Nairobi, Kenya, and 1972 was the year when this was established. Next is banking and finance. JSFL, that is Geo Financial Service Limited, they have launched Smart Gold for easy digital gold investment. So Mumbai, Maharashtra based Geo Financial Service Limited, right? They are registered with Reserve Bank of India as the NBFC, and they have launched here Smart Gold, right? This is a digital gold investment platform which will be accessible through the Geo Finance mobile application. This new offering will enable the customers to purchase 24 karat gold anytime with a minimum amount of 10 rupees. Correct? Take a note of this. Next, remember, Geo Financial Service Limited, they also received the RBI's approval to act as a online payment aggregator, right? And who is the online payment aggregator? These are the intermediaries between the customer and the businesses, and it is a third party service provider that allows the customers to make and businessmen to accept the payments online. If we talk about Geo Financial Service Limited, who is the chief executive officer here? Hitesh Kumar Sethia, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is Mahindra Finance and RBL Bank. They have launched the co-branded credit card, right? This will be the first co-branded credit card offering from Mahindra Finance. So take a note of this direct question. Next, awards and recognition. M. Karuna Reddy has received the first Jadav Payeng International Award. As you can see him in the picture, he is M. Karuna Reddy, right? He is a Telangana based environmentalist, and he has been awarded the first Jadav Payeng International Award, right? This award was launched by Jyoti Protap Education Trust, that is in Jorhat district. Where is Jorhat district? Jorhat district is in Assam. So this first edition of Jadav Payeng International Award given by Protap Education Trust, that is in the Jorhat district of Assam. And here, who received the first edition of this award? M. Karuna Reddy, right? He is also known as the Waterman and the Green Man of India. Take a note of this. Why? Because of his efforts towards the conservation of environment and climate action. He is also known by one more name, that is Crisis Man of India. Crisis Man of India, right? And this is for his efforts to provide relief during the disaster management or disaster prone areas. This award will be presented to him in January 2025 during a ceremony in Jorhat district of Assam. And one more name is given to him, that is the Forest Man of India. Forest Man of India. So Water Man of India, Green Man of India, Crisis Man of India, and Forest Man of India. Next is science and technology. Zimbabwe has launched GIMSAT-2. This is a satellite to enhance the space program, right? So Zimbabwe, correct, they successfully launched what? They launched a satellite, that is GIMSAT-2. This was launched using the Soyuz 2.1b spacecraft from Russia, right?
This satellite, this is an Earth observation satellite. This is equipped with high resolution multispectral camera with 8 meter spatial resolution designed for capturing the detailed imagery. This will help in monitoring crop health. It will help us to give the environment data. It will also support the geographical research, helping to identify the potential mineral resources. Next is sports. Australian cricketer Matthew Wade has retired from the international cricket. He was 36 years of age, and now Matthew Wade has taken retirement from the international cricket. Take a note of this, and he's a player from Australia. Next is Obituary. BPL Group founder TP Gopalan Nambiar has passed away at the age of 94. Right? BPL is your British Physical Laboratories, right? So TP Gopalan Nambiar, the founder of British Physical Laboratories Group, passed away at the age of 94 in Bengaluru, Karnataka. He was born in 1929 in Kannur, Kerala. Correct. He was honored with Electronics Man of the Year Award in 1992, National Citizens Award in 2000, and Lifetime Achievement Award in 2007. Next is important days. Children's Day or Bal Divas observed on 14th of November. Important, and we all know, right? It is observed on the birth anniversary of whom? It is observed on the birth anniversary of our India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru ji. Right? Then 14th of November, it marks 135th birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born in Allahabad, UP in 1889, and he was elected as the President of Indian National Congress. Also in 1947, he was sworn in as the first Prime Minister of independent India. He was honored with Bharat Ratna in 1955, and posthumously he was honored with the World Peace Council Prize also. Next is World Usability Day, observed on 14th of November. This day is observed generally on the second Thursday of November month, right? And this is to promote usability, accessibility, and user experience in design. Correct? So that sustainability can be promoted. So World Usability Day observed on 14th of November. The theme for this year was designing for a better world. Right? And we know that, as I mentioned, it is observed on the second Thursday of the November. This year in 2024, it was the 14th of November. Next is state news. Andhra Pradesh government presented the budget with an outlay of 2.94 lakh crore rupees. And this revenue expenditure has been pegged at 2.35 lakh crore rupees, and the capital expenditure at 32,000 crore rupees. If we talk about Andhra Pradesh, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh? N. Chandrababu Naidu. Next is Alka Tiwari appointed as the new Chief Secretary of Jharkhand. Take a note of this. Who has been appointed as the new Chief Secretary of Jharkhand? So Alka Tiwari. Election Commission of India approved the proposal to appoint Alka Tiwari as the Chief Secretary of State, and she will be replacing Lal Baikutlunga Khingate, who retired on 31st of October. Next, so these were your important current affairs, students. Now let's move to the quick one-liner revision. PM Modi was on a visit to Bihar. Then India launched a tri-service exercise by the name Purv Prahar, and this exercise was launched by Indian Army. Then Gujarat became India's first state to implement a dedicated semiconductor policy. Then CEEW report was released, and India's climate policy is expected to reduce carbon dioxide emissions by around 4 billion tons by 2030. Then Austrahind exercise between India and Australia held in Pune, Maharashtra. Then Jitendra Singh inaugurated India's first biomanufacturing institute, that is BRIC National Agri-Food Biomanufacturing Institute in Mohali. Then India's first writers village inaugurated where in Dehradun, Uttarakhand. Then climate change, about this, the finance that has been provided towards the climate change projects has increased by 32% in 2022. But still, there has been a large gap as per the report released by UNEP. Then Geo Service Financial Limited has launched Smart Gold for easy digital gold instrument. Mahindra Finance and RBL Bank, they have launched their co-branded credit cards. M. Karuna Reddy has received the first Jadav Payeng International Award. Then Zimbabwe has launched ZimSat-2. This is the satellite to enhance the space program, and this is an Earth observation satellite. Then Australian cricketer Matthew Wade has taken retirement from international cricket. BPL Group founder TP Gopalan Nambiar passed away at the age of 94.
Children's Day, Bal Divas observed on 14th of November, World Usability Day on 14th of November, and Andhra Pradesh government has presented the budget with an outlay of 2.94 lakh crore rupees. And Alka Tiwari appointed as the new Chief Secretary of Jharkhand. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part. Name the project that was recently launched by the Indian Army to provide support and services to the defense pensioners, veterans, and their families. What is the name of that project? The project is Naman. Right? Project Naman. This project Naman will focus on the implementation of various systems for pension administration Rakshak. That is your SPARSH. What is SPARSH? System for Pension Administration Rakshak. This is a digital pension system that will streamline all the processes that are related to pension. Next, which organization has recently signed an airframer contract with Safal Helicopters Engines Private Limited to develop and supply a helicopter engine by the name Aravali? So, name of the helicopter engine Aravali. So, which organization has signed this airframer contract with Safal Helicopters Limited? It is your Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. And this engine, it has been named after the Aravali mountain ranges. Next, name the bilateral naval exercise between India and France that was held in Mediterranean Sea from 2nd to 4th of September 2024. So what is the name of that bilateral exercise? The exercise is Exercise Varuna. Right? Then this exercise Varuna, it is the 22nd edition of this exercise held between India and France. Take a note of this. Right? And in this, from Indian side, INS Tabar took part in this exercise. Next, name the aerospace company that has recently achieved the successful maiden flight of the India's first indigenous unmanned bomber aircraft, that is FWD 200B. So what is the name of that company? That is Flying Wedge Defense and Aerospace. This aircraft is classified as a medium altitude long endurance, that is MALE unmanned aerial vehicle, and it has a wingspan of 5 meters and a length of 3.5 meters. It can fly at a cruising speed of 152 km per hour with a maximum speed of almost 250 km per hour. Next is in September, India successfully launched Agni 4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. That is Agni 4. It belongs to which type of missile? So this Agni 4, this is a intercontinental ballistic missile, and it was India that has successfully tested this Agni 4 missile from the ITR in Chandipur, Odisha. This Agni 4, this is a surface to surface ballistic missile that has a range of 4,000 kilometers. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenously designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft named the INS Malpe and INS Mulki? So which is that shipbuilding company? It is Cochin Shipyard Limited that has developed this 4th and 5th of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft project. 4th is INS Malpe and the 5th is INS Mulki. Next, name the military exercise between India and USA that has recently commenced at the Foreign Training Node in Rajasthan. What is the name of that exercise? The exercise is Yudh Abhyas, right? And it will run till 22nd of September 2024. This is the 19th edition of this Yudh Abhyas exercise held in Alaska, USA, right? I repeat, this the 19th edition. I repeat, one more thing, correction here. The 19th edition of Yudh Abhyas was held in Alaska, USA, but this time this is the 20th edition of this exercise that we are talking about, that was held where? In Rajasthan. Next, which defense company has recently signed a contract worth 26,000 crore rupees with the Ministry of Defense for the procurement of 240 AL-31FP aero engines for Sukhoi 30 Mark 1 aircraft of the Indian Air Force? So which is the defense company? It is Hindustan Aeronautics Limited. Next, name the country where Indian Navy's P-8I aircraft recently reached to participate in the 16th edition of exercise Kakandu. So what is the country where Indian Navy's aircraft reached? It is Australia, right? Then in this exercise, more than 3,000 personals over 32 nations took part.
Next is name the missile that the Indian Navy and DRDO successfully tested in flight from the launch pad of the ITR in Chandipur off the coast of Odisha. What is the name of that missile? That is VLSRSCM, that is Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile. Next. Next is name the joint exercise that was recently conducted between Indian Air Force and Royal Oman Air Force in Oman. What is the name of that exercise? The exercise is Eastern Bridge. And this bilateral exercise began on 11th of September and it will end on 22nd of September. Also remember the 5th edition of Al Naja exercise held between Indian Army and Royal Army of Oman. Right, so air exercise is Eastern Bridge and the exercise between the armies is Al Naja. Next, Ministry of Defence, they approved the Indian Navy's 2500 crore rupees plan to develop what? It was to develop the extra large unmanned underwater vessel. The vessels are expected to strengthen India's defence against enemy submarines and surface vessels. Next, which city has recently hosted the Indian Defence Aviation Expo, that is IDAX 2024? So it is Jodhpur, Rajasthan, where this Jodhpur, Rajasthan, that is Jodhpur is the city where it hosted the Indian Defence Aviation Expo 2024. Also, Tarang Shakti exercise was concluded here. Tarang Shakti is one of the largest India's first multinational air exercise hosted by our Indian Air Force. Next, name the state-of-the-art Kalvari submarine escape training facility that was recently commissioned by the Indian Navy at INS Satwana in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, recently, what is the name of that facility? It is Vinitra. Next is students, science and technology. Which company has recently launched Sentinel-2C satellite aboard last Vega rocket for environmental monitoring? The name of the company is Ariana Space. This satellite, it will serve as the Earth observation satellite for the European Union, which will provide important data for the environmental, correct, or we can say important data for the environment monitoring. Next, name the India's first space station which will be launched by 2028 by ISRO. So India's space station, it is Bharatiya Antariksh Space Station, and the entire setup will have 5 modules. First module will be launched in 2028 and it is expected by 2035 India will have our own space station. Next, which company has recently announced plans to set up India's first multi-sensor all-weather high revisit Earth observation satellite constellation? What is the name of that organization? It is Naib Space Private Limited. Right? It aims to promote India's defense and space capabilities that will promote self-reliance in the defense sector. And also you will be seeing with this in the coming 5 to 6 year 40 low earth orbit satellites will have, or the constellation will have 40 to 50 satellites here in the next 5 to 6 years. Next, name the SpaceX Crew mission that has recently led by an American billionaire entrepreneur Jared Isaacman returned to Earth following the successful completion of the world's first private spacewalk. So who did the first private spacewalk? Jared Isaacman. Right, he led this mission and it is the mission of spacewalk. Question asked here is that what is the name of that SpaceX Crew mission? So the mission's name is Polaris Dawn. Next, which country has recently launched the Chandrayaan-1 research satellite into orbit by QM-100 satellite carrier? So this both Chandrayaan-1 satellite and QM-100 satellite carrier, it is of Iran. Right, this Chandrayaan-1 satellite, it weighs around 60 kilograms and it is designed to test the hardware and software for orbital maneuver technology. Next, according to a recent study from USA-based Cornell University, the first human-made meteor shower may occur from the rocket debris left over from NASA's which mission? So it has been left over from NASA's Double Asteroid Redirection Test Mission. Right? Next is which aerospace company has recently launched Project 200, an innovative satellite designed to operate at an ultra low Earth orbit. So what is the name of that aerospace company? The company is Bellatrix Aerospace Private Limited. Next, name the rocket that was launched by China from a sea platform on the waters near the city of Hyang to place 8 satellites into planned orbit.
The name of that rocket is Geelong 3. Next is students our homework section. Tell me who has been appointed as the president of Tunisia. Second, tell me who has been appointed or who has been given the additional charge as the chief executive officer of GEM portal. Correct? That is Government E Marketplace. Then next tell me who has been appointed as the CEO and MD of IRFC. So these are your 3 homework questions, friends. If you like the session, do hit the like button and do comment below what are your views for the same. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 17 एंड 18 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में टोटल 18 टॉपिक्स रहेंगे ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, जहां पे हम बात करेंगे पीएम मोदी के विजिट टू बिहार, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहां पे लॉन्च किए गए हैं। देन हम बात करेंगे इंडिया ने लॉन्च की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। देन हम बात करेंगे इंडिया में गुजरात, हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दैट टू सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इसका हमें स्कोप देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद इंडियाज़ क्लाइमेट पॉलिसीज़ की बात करेंगे जहाँ पे CO2 रिडक्शन के ऊपर बात की गई। देन ऑस्ट्राहिंड की बात करेंगे, ये एक एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगी। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स वीडियो डालते हैं। देन वीकली करंट अफेयर्स भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती है। मंथली करंट अफेयर्स आपकी रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती है, एज वेल एज टॉपिक वाइज भी हम मेक श्योर करते हैं कि आप तक पहुंचा सके ताकि आपकी लर्निंग और बेहतर हो सके। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माई नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर नेशनल अफेयर्स पर। पीएम मोदी अभी विजिट पे थे टू बिहार 13 नवंबर में। एंड जो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की है ना, वो ये है कि इनके द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि है एम्स का। एम्स मेडिकल स्कूल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार इसको लॉन्च किया गया। 1264 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया। पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए मल्टीपल इनिशिएटिव पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर में, राइट, एंड ये 4020 करोड़ की लागत से इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट सबसे क्या याद रखेंगे यहाँ पे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बिहार के एम्स को लाने की यहाँ पे बात की गई। एम्स को इनॉग्रेट किया गया वर्थ 1264 करोड़ रुपीस की लागत से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर इंडिया ने अभी एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करी जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। ये ईस्टर्न सेक्टर में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा जाएगा। एंड पूर्वी प्रहार की अगर हम बात करें, जैसे बोल रहे हैं ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी के द्वारा तो इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ट्राई सर्विस है तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों के द्वारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर रुद्रा हेलीकॉप्टर, M777 अल्ट्रा लो लाइट आर्टिलरी सिस्टम्स का यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, लॉइटर म्यूनिशंस, स्वॉर्म ड्रोन्स, इन सब का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में। देन नेक्स्ट थिंग पूछी जा सकती है कि लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, तो अरुणाचल प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात। जैसे हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब निकल कर आ रहा है एंड गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई है 2022 से लेकर 2027 तक, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे ये पहली इंडियन स्टेट बनी है जिन्होंने एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई है, करेक्ट, सेमीकंडक्टर को ग्रो करने के लिए। ये चिप्स जो होती है ना सेमीकंडक्टर्स की, आप हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, टीवी में, इवन आप अपने अगर गाड़ी में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसमें भी इनका यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। एंड गुजरात ने इस्टेब्लिश किया है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन ताकि इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके एंड यहाँ पे इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो किया जा सके। एक एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ना, जो 2020 में वैल्यूड थी एट $15 बिलियन, इट इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड $63 बिलियन बाय 2026। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन रहेंगे? आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर रहेगी। नेशनल पार्क यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है एंड वंसदा नेशनल पार्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं CEEW रिपोर्ट। ये क्या है? काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो CO2 एमिशंस है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसके रिडक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक 4 बिलियन टन तक का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। ये किसके द्वारा? CEEW के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग साउथ एशियन कंट्री है एंड ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, करेक्ट। एंड इन्होंने प्लेज किया है कि हम 1 बिलियन टन यहाँ पे 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे बाय 2030। ये प्लेज कब लिया गया था? ये लिया गया था COP26 के दौरान, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी 2021 में। इसी के अलावा एक रिपोर्ट और दर्शाती है कि जो पॉलिसीज हैं इंडिया में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दिखाया है, इफेक्टिव रही हैं। पावर एंड रेजिडेंशियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने 440 मिलियन टन की कार्बन डाइऑक्साइड सेव कर लिया बिटवीन 2015 से 2020 के बीच। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्राहिंद एक्सरसाइज की। ऑस्ट्राहिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होगी ऑस्ट्राहिंद। कहाँ पर होगी? पुणे महाराष्ट्र में ये हमें देखने को मिलेगी ऑस्ट्राहिंद एक्सरसाइज। 8 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। ऑस्ट्राहिंद कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन राजस्थान ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगी। यहीं पे इंडिया की तरफ से 140 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? मोहाली, पंजाब में। इससे जो हमारा एग्री फूड सेक्टर है उसको काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा एंड ये एक रेवोल्यूशनाइज लाएगा इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय कंबाइनिंग द एक्सपर्टीज बायोटेक्नोलॉजी में एंड बायो प्रोसेसिंग में, करेक्ट। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा जिससे जो लोकल यूथ है, वीमेन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को इससे मिलेगा। कहाँ पर? मोहाली, पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया की पहली राइटर विलेज कौन सी बनी? वो है देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एंड यहाँ पर इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया था बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह के द्वारा, करेक्ट। एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। पहली राइटर्स विलेज कौन सी है? देहरादून। कहाँ की है ये? उत्तराखंड की। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज पब्लिक अडेप्शन फाइनेंस ग्रू बाय 32% इन 2022 बट लार्ज गैप रिमेन्स एज पर UNEP। देखो अभी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई जो दर्शाती है कि जो पब्लिक अडेप्शन है ना, या फिर हम बोलें जो फाइनेंस, जो पैसा लगता है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइट। अगर हमें सफाई करनी है तो इसमें जो पैसा लगता है ना, इसमें हमें 32% का ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिला है पैसे का एज़ कम्पेयर टू अगर हम 2021 देखें तो 2021 में ये जो इन्फ्लो था पैसे का, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो 2021 में हमें $22 बिलियन का फाइनेंस देखने को मिला। वही 32% से बढ़ के 2022 में ये हो गया है $28 बिलियन का इन्फ्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस।
जियो सर्विस फाइनेंशियल लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट गोल्ड को। ये एक इजी डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप क्या है बेसिकली 10 रुपये से मिनिमम 10 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं, कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं। एंड लॉकर के फॉर्मेट में प्रॉपर आपका ये 24 कैरेट गोल्ड यहाँ पे आप बाय कर पाएंगे एंड इसको आप स्टोर कर पाएंगे। राइट, ऑनलाइन ही, आपको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन ही रहेगा। करेक्ट, जितना आप बाय करेंगे उतनी ये अपने बाय करके अपने लॉकर में सेव करते रहेंगे। राइट, एंड ये 24 कैरेट गोल्ड रहेगा। जो भी मार्केट प्राइस होगा उसी मार्केट प्राइस पे आपका यहाँ पे परचेज हमें देखने को मिलेगा। करेक्ट, तो जियो सर्विस फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यहीं पे आप देख सकते हैं इन जैसे आपके पास फिजिकल गो ये आपको काफ़ी गोल्ड इकट्ठा हो गया, आप उसकी फिजिकल डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ऑल्सो जियो सर्विस फाइनेंस लिमिटेड, इनको अभी अप्रूवल मिल गया आरबीआई का टू एक्ट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। जियो सर्विस फाइनेंस लिमिटेड की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हितेश कुमार सेठिया रहेंगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। महिंद्रा फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक, इन्होंने लॉन्च किया अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है बाय महिंद्रा फाइनेंस, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। राइट, एंड महिंद्रा ग्रुप ये होल्ड करते हैं 3.53% स्टेक इन आरबीएल बैंक। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आ जाते हैं एंड हम बात करेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड की। ये अवार्ड दिया जाता है बेसिकली कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है एंड ये पहला अवार्ड था, फर्स्ट एडिशन था इस अवार्ड का जो दिया गया। करेक्ट, एंड ये दिया गया विद द फर्स्ट जादव पेइंग इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च्ड बाय ज्योति प्रोटैप एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि जोरहट डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ असम। अगर हम बात करें एम करुणा रेड्डी की, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ये तेलंगाना के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इन्हीं को वाटरमैन, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हीं को क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए करेक्ट इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। जिम्बाब्वे की हम बात करेंगे। जिम्बाब्वे के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है जिमसैट-2। ये एक सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ के जो इनका स्पेस प्रोग्राम है उससे उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ये सोयूज 2.1B रॉकेट्स की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। रशिया से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसमें आपका मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है विद 8 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर करने का काम करेगी, डिजास्टर रिस्पांस में हेल्प करेगी, इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस में हेल्प करेगी एंड डाटा को ट्रांसमिशन करेगी ताकि एक बेटर उनका एनालिसिस हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू वेड, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। 36 साल के हैं ये एंड इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ऑबिट्री के ऊपर। बीपीएल ग्रुप फाउंडर टीपी गोपालन नैम्बियर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94। बीपीएल क्या है? ब्रिटिश फिजिक्स लेबोरेटरी। राइट, तो टीपी गोपालन नैम्बियर ये फाउंडर थे बीपीएल के। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94 इन बेंगलुरु कर्नाटका एंड कन्नौर केरला में 1929 में इनका जन्म हुआ था। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1992 में। दैन इनको नेशनल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया सन 2000 में एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया सन 2007 में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। तो चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस बोले तो 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राइट, ये इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1947 में एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में हमने 135वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी यहाँ पर ऑब्जर्व करी। इनका जन्म जवाहरलाल नेहरू जी का इलाहाबाद यूपी में हुआ था 1889 में। दैन ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दैन ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947 में। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1955 में एंड वर्ल्ड पीस काउंसिल अवार्ड से, वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1970 में इनको पोस्ट ह्यूमसली, मतलब इनके निधन के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये डे बेसिकली यूजेबिलिटी का, यूजर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन का करेक्ट अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड थिंग्स को ईजियर बनाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ। राइट, एंड इस बार 2024 में ये 14 नवंबर को फॉल किया। पहली बार 2005 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। इसकी एक थीम है डिजाइनिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड एंड ये सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स व स्टेट न्यूज़ के ऊपर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी प्रेजेंट किया अपना बजट विद एन आउटले ऑफ 2.94 लाख करोड़ रुपीस। डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ये कौन है? ये एन चंद्रबाबू नायडू हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अलका तिवारी, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड स्टेट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? लाइल बाई कटलुंगा खिंगाटे को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी। कहाँ के? झारखंड की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी बिहार की विजिट पे थे। देन इंडिया ने लॉन्च किया ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार के नाम से ईस्टर्न सेक्टर में। देन गुजरात वो पहली स्टेट बन गई इंडिया की टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। देन CEEW रिपोर्ट की बात करें, इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसीज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस CO2 emissions बाय अराउंड 4 बिलियन टन्स बाय 2030। ऑस्ट्राहिंड की बात करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिली। देन जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? मोहाली पंजाब में। देन इंडिया के पहले राइटर्स विलेज देहरादून। देन अभी UNEP के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि 2021 से 2022 की बात करें तो जो फंडिंग है इन्वायरमेंट सेक्टर में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, वो 32% से बढ़ती हुई दिखी। देन जियो सर्विस फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया स्मार्ट गोल्ड फॉर इजी डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। महिंद्रा फाइनेंस एंड RBL बैंक के द्वारा मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया गया। देन एम करुणाकर रेड्डी, इन्होंने रिसीव किया पहला जादव पेयंग इंटरनेशनल अवार्ड को। देन जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया ZIMSAT-2 सैटेलाइट को ताकि स्पेस प्रोग्राम को एनहेंस किया जा सके। देन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। देन BPL ग्रुप फाउंडर TP गोपालन नैयर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 94। देन चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस ऑब्जर्व किया गया 14 नवंबर को। वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे 14 नवंबर। एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया अपना बजट विद एन आउटले ऑफ 2.94 लाख करोड़ रुपीस। एंड अलका तिवारी, इनको अपॉइंट किया गया नया चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड स्टेट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे। 2 से लेकर 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट। तो ये है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम ITR इन चांदीपुर ओडिशा। जो ये अग्नि 4 है ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया? 4th and 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th and 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? युद्ध अभ्यास, राइट। एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है? USA में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट,
नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनस देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से, जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट। तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटिनल-2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रीविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेसएक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है स्पेसएक्स के? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया चैमरन-1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये चैमरन-1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं क्वेम 100 या फिर चैमरन-1, तो ये ईरान के रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम USA बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन? तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट। इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स थे, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी। ठीक। नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट? तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा फ्रॉम अ सी प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर्स नियर द सिटी ऑफ हियांग टू प्लेस 8 सैटेलाइट्स इनटू प्लैंड ऑर्बिट? तो क्या नाम रहेगा उसका? जिएलोंग 3। नेक्स्ट इज हमारा स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन। अभी बताओ, नोबेल प्राइज दिए गए थे, तो केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, नोबेल पीस प्राइज किनको मिला? ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये तीनों मुझे बताओ, राइट। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, एंड कमेंट बिलो व्हाट आर योर व्यूज फॉर द सेम ऑल्सो। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। अभी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था किसी प्लैनेट के
मून को स्टडी करने के लिए इस मून पर आइस है और उसके नीचे वाटर मिला है, उसको स्टडी करने के लिए 2030 तक वो सैटेलाइट, ये रॉकेट वहां पे पहुंचेगा एंड 2031 तक अपना वहां पे एग्जामिनिंग उसकी स्टार्ट करेगा। उसका नाम क्या है इस प्लेनेट और इस मून का, और उस मिशन का नाम, उसके जो ये मिशन का नाम है ना, ये इस मून के नाम पे बिहाफ पर है। मैंने काफी हिंट दे दिया है, अब इसको कमेंट करके बताओ। राइट, तो सेशन पसंद आया स्टूडेंट्स? अगर आप नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।